जी अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome back to my YouTube channel, and today you are watching Executive English Hub Tricks with Sayyid Tayyab. And today we're gonna discuss the exercise of unit number 10, Youth at Risk. So first of all, the first question is, what challenges do the youth face in Pakistan and how do they affect their future? The answer to this question is, Pakistan's youth face numerous challenges that significantly impact their future prospects. Limited access to quality education, healthcare, and employment opportunities hinder their growth and development. Additionally, societal pressures, poverty, and lack of skills training exacerbate the issues, leading to increased unemployment and vulnerability to extremism. Next question is, how prevalent is drug addiction in Pakistan's educational institutions, and what factors contribute to its increase? The answer to this question is, drug addiction is a growing concern in Pakistan's educational institutions, affecting approximately 50,000 new students annually. 1 in 10 college or university students struggles with addiction, with 78% being male and 22% female. Factors contributing to this increase include easy drug availability, shifting social norms, economic frustrations, and lack of support systems. Next question is, what biases or opinions can you identify in the text regarding the causes and solutions to the issues of drug addiction among students? The answer to this question is, the text reveals biases towards societal and economic factors as primary causes of drug addiction among students, emphasizing the role of availability, shifting social norms, and economic frustrations. It also implies a need for institutional and systematic solutions such as support systems and policy changes. The next question is, how does drug addiction impact on individuals' health, academic performance, and future prospects? The answer to this question is, drug addiction severely impacts an individual's overall well-being, comprising physical and mental health, academic performance, and future prospects. It leads to criminal activity, violence, and the spread of infectious diseases such as HIV and hepatitis C, among others. The next question is, what are the consequences of drug addiction in educational institutions for both users and the overall academic environment? The answer to this question is, drug addiction in educational institutions has significant consequences for both the users and the overall educational environment. Firstly, addiction can severely impact a student's academic performance, leading to missed classes, struggles with coursework, and ultimately poor grades or academic suspension. Next question is, which paragraph of the article contributes to the main idea of the text? The answer to this question is, the introductory paragraph of Youth at Risk typically contributes most to the main idea, defining vulnerable youth, outlining challenges, and previewing key themes. This opening section sets the tone and framework for the article, providing contexts and statistics. It captures the essence of the issue, drawing readers into the discussion. Usually it's the first one.
जी, अब जो है चूज द करेक्ट आंसर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द टेक्स्ट? द मेन फोकस इज यूथ एट रिस्क ड्यू टू ड्रग यूजेज। Number two is what socio-economic factors are attributed to the rise of drug addiction among the youth population in Pakistan? Lack of education and unemployment. What is the role of parents and families in preventing drug addiction as mentioned in the text? Providing a supportive environment and open communication. Why do students influenced by their peers often start using drugs according to the text to fit in or feel accepted? What consequences does drug addiction in educational institutions have on a student's academic performance? Missed classes and poor grades. ओके, अब वोकैबुलरी इस चैप्टर की डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं गिवन आपके पास बी पार्ट में। राइट द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इनके कुछ एंटोनिम्स बताने हैं और सिनोनिम्स बताने हैं। तो फर्स्ट इज इशू, इसका एंटोनिम होता है विड्रॉ और सिनोनिम होता है मैटर एंड अफेयर। होमलेस, इसका एंटोनिम होता है सेटल्ड और सिनोनिम होता है अनशेल्टर्ड। एक्सेस, इसका एंटोनिम होता है रिजेक्ट और सिनोनिम होता है एक्वायर और गेन। रिलीफ, इसका एंटोनिम होता है स्ट्रेस और सिनोनिम होता है कंफर्ट। लीड, इसका एंटोनिम होता है फॉलो और सिनोनिम होता है गाइड। वायलेंस, इसका एंटोनिम है वीकनेस और सिनोनिम है इसका ब्रूटैलिटी। जी, नेक्स्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स आर सेट ऑफ वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स का मजमुआ होता है या सेट्स होते हैं डेट में लुक और साउंड सिमिलर, जो या तो दिखते और सुनाई एक जैसे देते हैं, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मीनिंग्स, उनके मतलब मुख्तलिफ होते हैं। सम कॉमन पेयर ऑफ वर्ड्स इंक्लूड, जैसे कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब के तौर पे यूज़ होता है और एक्सेप्ट एज अ प्रेपोजिशन और कंजंक्शन यूज़ होता है। जो फर्स्ट वाला एक्सेप्ट है उसका मतलब होता है टू रिसीव विलिंगली, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को रिसीव करना अपनी मर्जी से। और एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग विद द एक्सक्लूशन ऑफ, किसी चीज़ को छोड़कर या किसी चीज़ के बजाय। अफेक्ट, ये एज अ वर्ब यूज़ होता है, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ चेंज और इन्फ्लुएंस समथिंग, किसी चीज़ में कोई चेंज लाना या कोई चेंज प्रोड्यूस करना, कोई तब्दीली लाना। इफेक्ट एज अ नाउन यूज़ होता है, इसका मतलब होता है अ चेंज दैट अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक एक्शन। अ रिजल्ट, किसी रिजल्ट के चेंज में कोई चीज़ होना, उसको कहते हैं इफेक्ट। हमारे पास ये पार्ट सी है, फाइंड मोर पेयर ऑफ वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स, यूज देम इन सेंटेंसेस टू। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके लिए कुछ जो है वर्ड्स और उनके मीनिंग्स लिखे हैं, बाकी आप सेंटेंसेस इनको इजीली बना लीजिएगा। एक्सेस, इसका मतलब होता है एंटर या अप्रोच। एक्सेस, इसका मतलब होता है मोर देन नेसेसरी। अडॉप्ट, लीगली टेक और अडेप्ट। बिकम, एडजस्टेड। Advice, guidance. Advice, offer recommendations. Allot, large in number. Allot, give. A while, a time period. A while, for a short time. जी, ये हमारे पास कुछ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं सेंटेंस के, कैसे एक्टिव वॉइस को आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस होती क्या है? एक्टिव वॉइस इज अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इन विच द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन expressed by the verbs. In other words, the focus is on the doer of the action. Sentences in active voice typically follow a straightforward word order, subject, verb और object. Basically वो ये बताना चाह रहा है कि
जो एक्टिव वॉइस है वो हमारे पास सेंटेंस में वो पार्ट होता है कि जिसको हम जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहले आता है, देन वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट काम करने वाला उसको हम कहते हैं द थिंग विच परफॉर्म्स एक्शन। कोई चीज एक्शन को कर रही हो, परफॉर्म कर रही हो, कोई चीज काम कर रही हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस पर काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह से जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब भी है या हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इसी तरह से पैसिव वॉइस क्या होता है? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इन विच द सब्जेक्ट ऑफ अ sentence receives the action of a verb rather than performing the action. In other words, the focus is on the recipient of the action rather than the one carrying it out. Passive voice may also be used when the subject is unknown. हम पैसिव वॉइस में इस तरह से करते हैं कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसको हमने चेंज करना होता है और इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करने के बजाय एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, लाइक ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम खुद से सब्जेक्ट लगाते हैं उसकी जगह पर, तो उसको हम चेंज कर देते हैं पैसिव वॉइस में। तो बेसिकली यहाँ पे देखें आप कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, देन वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट है, वर्ब है एंड देन सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से कर देना है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास पैसिव वॉइस करते हुए टू बी की यानी फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब की जो भी फॉर्म होगी वो हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली उस टेंस के। और उसके बाद मेन वर्ब जो है उसकी हमेशा फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद एडिशन ऑफ बाय करेंगे, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस चेंज हो जाता है। 4 रूल्स और स्टेप्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह टेंस चेंज अकॉर्डिंगली। टेंस को हम टू बी की जो फॉर्म है उसको हमने चेंज करना होता है अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से। और उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है ये वाली, इसको हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है। और इसके बाद लास्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ बाय कर देना है। इन रूल्स को फॉलो करने के लिए आप बेसिक से ये इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। आप यूँ करें कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख दें, देन आप दरम्यान में काफ़ी जगह छोड़ दें। उसके बाद सेकंड रूल है आपके पास कि टेंस को चेंज करना है, तो टेंस का आप चेंज करें यानी हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज करें, कौन सा वर्ब है किस में आपने चेंज करना है, और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं एंड देन फिर आप एडिशन ऑफ बाय करें, तो ये आपके पास पैसिव वॉइस चेंज हो जाता है। टेंस चेंजिंग रूल्स के लिए हमारे पास ये कुछ सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल है इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, तो उसको हमने पैसिव वॉइस करते हुए इज एम आर में चेंज करना है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस वर्ब बीइंग। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो हमने उसको इज एम आर के साथ बीइंग लगा देना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को। प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट प्लस बीन। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस करते हुए हमने हैज और हैव के साथ बीन लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। इसी तरह से पास्ट के लिए आपके पास ये रूल्स हैं कि पास्ट सिंपल है तो आपने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें ही रहकर आपने बी ई आई एन जी का इजाफा करना है, एंड देन परफेक्ट है तो उसी में रहकर आपने बीन का इजाफा करना है। अब यहाँ पे देखें, ही रोट अ लेटर, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, रोट हमारे पास वर्ब है, अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जो ये 4 स्टेप्स है उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए स्टेप बाय स्टेप, तो अगर हम इस तरह करें, ही को सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दें, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और ऑब्जेक्ट जो है अ लेटर उसका सब्जेक्ट अगर हम इसी तरह से लिखेंगे अ लेटर, और रोट जो हमारे पास है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हमने चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म में
रिटर्न आ जाता है। और इसी तरह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल का जब कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं तो वॉज वर आ जाता है। ही रोट अ लेटर का होगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। तो इस तरह से ये हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर पास्ट कंटिन्यूअस को देखें तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है और अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हम इसी तरह से अगर करें सब्जेक्ट ही इनटू हिम चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट अ लेटर स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड रूल था टेंस को चेंज करना था। तो टेंस जो है हमारे पास वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके साथ हमने बीइंग लगाना होता है। तो वॉज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अगर प्लूरल होता तो वर लगाते। वॉज लगाकर हमने बीइंग लगा दिया साथ। एंड देन फिर थर्ड रूल था हमारे पास, हमने मेन वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देना थर्ड फॉर्म में। तो मेन वर्ब जो है वो हमारे पास ये रिटर्न थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है। और उसके बाद फोर्थ रूल था हम लोगों के पास कि हमने एडिशन ऑफ बाय करना था। तो बाय के एडिशन करने के बाद ये हमारे पास पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस को देखें तो ही हैड रिटन अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब रिटन है, अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अ लेटर को हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे और सब्जेक्ट जो ही है उसको हम ऑब्जेक्ट उसका हिम होता है। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, हैड है तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको हम इसी में रहने देंगे, बस बीन का इजाफा कर देंगे, बी डबल ई एन। और इसी तरह से मेन वर्ब है उसको हमने चेंज करना है, किसमें थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म रिटर्न ही होती है। इसी तरह से एडिशन ऑफ बाय है, फोर्थ जो स्टेप था वो हमारे पास एडिशन ऑफ बाय था, हमने एडिशन ऑफ बाय किया और ये हमारे पास पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो पार्ट नंबर ए एक्सरसाइज की देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ब। आपने कुछ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को चेंज करना है करेक्ट वर्ब के साथ बाय यूजिंग यूज द टेंस क्लू गिवन एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। आपको टेंस का क्लू दिया गया है कि कौन सा टेंस किस में आपने चेंज करना है। अ फेमस नॉवल डैश पब्लिश बाय द ऑथर इन 1980, इसको आपने टेंस जो है पास्ट सिंपल में था तो आपने इसको चेंज करना था पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आ फेमस नॉवल वाज पब्लिश्ड बाय द ऑथर, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस में, पास्ट सिंपल में हमारे पास एक्टिव वॉइस था, इसमें हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना था क्योंकि बाय ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से द मिसिंग कीज वर बीइंग सर्च्ड बाय समवन इन द ऑफिस यस्टरडे, एक्टिव वॉइस इसका पास्ट कंटिन्यूअस में था तो हमने इसको पास्ट कंटिन्यूअस में रहने देना था लेकिन बीइंग का इजाफा कर देना था। इसी तरह से इंपॉर्टेंट डिसीजंस had been taken by the committee last month. Next, the old bridge was designed by the engineers in 2005. Valuable lessons were learned by life experiences during my childhood. The surprise party was being planned by our friends last weekend. Stunning photographs had been captured by the photographer during the event. The lost documents was found by the secretary last Friday. The rare species of birds were discovered by scientists in the 19th century. The old house was being renovated by the real estate company in 2010. Exciting news were being reported by the media yesterday. The classic movie was directed in the 1950s. The mysterious case was being investigated by the detective last week. The forgotten song was recorded by the singer in her early career. Ancient artifacts were unearthed by archaeologists in the 1800s. Rewrite the following sentences by changing into passive voice. The teacher explained the lesson yesterday. The lesson was explained by the teacher the previous day.
They were building a sandcastle on the beach. A sandcastle was being built by them on the beach. She had finished her homework before dinner. Her homework had been finished by her before dinner. He was writing an essay for hours. An essay was being written by him for hours. The team had won the championship by that time. The championship had been won by the team by that time. The children played in the park all day. The park was played by the children all day. The scientists were conducting experiments last week. The experiments were being conducted by the scientists the previous week. She had visited the museum before. The museum had been visited by her before. They were singing a song in the talent show. A song were being sung by them in the talent show. They had completed the project before the deadline. The project had been completed by them before the deadline. We celebrated their anniversary last night. Their anniversary was celebrated by us the previous night. Millions of people were watching the movie. The movie was being watched by the millions of people. She had already prepared breakfast. The breakfast had already been prepared by her. The team had won the championship for the third time. The championship had been won by the team for the third time. He had planted the flowers in the garden. The flowers had been planted by him in the garden. मॉडल वर्ब्स हैं हमारे पास कुछ. चूज द सुटेबल मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मॉडल वर्ब्स जो है वो हम लोगों ने यूज करते हैं कैन, कुड, मे, माइट. इनको हम एज अ परमिशन, रिक्वेस्ट और एबिलिटी वगैरह के लिए हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं माय टीचर कैन speak 4 languages. May I use your mobile to call my mother? You must not speak loudly in the hospital. I must use a little help in packing all these clothes. Madam, could you repeat what you said? I might not be able to make it tonight. Sam must study more if he wants to pass the test. Can you come to the prom with me? My parents shall arrive soon. I could be late as I have a lot on my plate. Tahir can easily solve the problem. It might rain tomorrow. इसी तरह से choose the correct modal verbs. I think I might have failed the test, but I am not sure. We have to rush. We must not miss the last bus home. If you had let me know earlier, I would have been able to come. You must help me. Will anybody attend the lecture, or is it just for registered students? You would not have bothered coming. I have done it already. उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्रामेटिकल टॉपिक्स समझ आए होंगे. अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.